Good evening, dear students. Welcome to matrixdigilearn, and today we'll discuss about the computer application with the topic internet application. ताला आज हम इंटरनेट ऊपर किसी डिस्कशन करिबा। मैं पूर्व क्लास गुडा करे बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल्स ए सब जिंस ऊपर प्रायत डेप्थ डिस्कशन करिछि। तो आज हम इंटरनेट विषय किसी डिस्कशन करिबा। The first question for you: the internet, sometimes called simply net, इंटरनेट को आमे सिंपली नेट बोली कहू ताले तार ऑप्शन गुडा अछि ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that joins computers from all across the world. Second option अछि an internal communication system. Third option अछि a communication system for the government, and last option अछि all of the above. इंटरनेट को आमे सिंपली नेट बोली कहू ताले इंटरनेट रो सिंपली मानेटा कोन? ए चारटा ऑप्शन भितरु ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, व्हिच इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए टा होची राइट आंसर। ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट जॉइंस कंप्यूटर्स ऑफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट रो सिंपली डेफिनेशन टा कोन बुझे सेडा दरकार। इंटरनेट means international network. International net network. Internet is the world's largest computer network, the network of networks scattered all over the world. Internet होची विश्वर सर्वबृहत्तम कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ को कि नेटवर्क मानकर नेटवर्क बोली भी कहा जाए, जहाँ पृथ्वी सारा बा विश्व सारा स्कैटर माने बिछेई की अछि। So first option by option A is the most appropriate answer for the internet. Next question for you. The interconnection of networks all across the world is known as, सेटा को कौन बोली कहंती? जस्ट टिके आगुरु कहली सिंपली जिंस ताको इंटरनेट बोली ही कहंती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The concept of the internet was originated in, इंटरनेट रो मूल कांसेप्ट केते मसिया आसला? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971 and option D 1981. इंटरनेट रो मूल कांसेप्ट 1969 रे एक्चुअली डेवलपमेंट हैला। तमे जानि नथिबो तांकर एक्चुअली ए जो नेटवर्क रो पथ प्रदर्शक बा मार्गदर्शक होउछन तांका नाम होची जेसियन लिक लाइडर बा जोसेफ कार्ल रोबनेट लिक लाइडर। से प्रथम फेज रे चिंता कले जे केमिति गोटे नेटवर्क करा जाई परिबो। नेटवर्क माने गोटे कंप्यूटर रो डाटा आ गोटे कंप्यूटर को ट्रांसफर होई परिबो। तापर कोन होला विंटन ग्रेस ऑफ को सहित से मिसिले गोटे प्रोटोकॉल टाइप रो जिंस डेवलपमेंट करले। चारिटा फेज रे सॉरी चारिटा कंप्यूटर को नेकी गोटे डिजाइनिंग करा गला स्मॉल नेटवर्क रो, एंड सेही नेटवर्क रो आईडिया आज हमको विश्व स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क बा इंटरनेट रो बाटो देखि छी। So option B is the right answer. Next question for you. The origin of the internet was developed from the concept of, मु तो जस्ट टिके आगुरु नाडा भी कहिनी, ठीक अछि। एक्चुअली इंटरनेट रो जो मूल कांसेप्ट ता कोट डेवलपमेंट हैला? एक्चुअली इंटरनेट रो मूल कथाटा आर्पानेट रो ही डेवलपमेंट हैला। ऑप्शन सी आर्पानेट माने जोडा तमे कहूछ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एई जगह रे एटा होछ गोटे यूएस रो संस्था। तो यूएस रे फर्स्ट फेज रे अनेक गुडा कंप्यूटर को नै एठी गोटे नेटवर्क सिस्टम रो डेवलपमेंट करा गला, जोडा कि हमर इंटरनेट रो प्रकृत कांसेप्ट रो डेवलपमेंट करिवार मूल माध्यम बा मूल कोन भित्तिभूमि आर्पानेट। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. In 1969, ARPANET was developed by which country? मु तो जस्ट टिके आगुरु भी कहि देलानी काई ना गोटे कांसेप्ट आ गोटे कांसेप्ट सहित लिंक रहउची। तो छाड़ो ऑलरेडी मु ता आंसर भी तो तुम कहि सैलेनी, तार एलाबोरेट भी एठी बढ़िया भागे बुझाई गेला। तो जो ARPANET तमे कहउचो 1969 रे डेवलपमेंट करा आइची, सेटा एक्चुअली यूएसए कंट्री रो। आजि भी हमें कंप्यूटर क्षेत्र रे
जदि एडवांस को कंट्री को हमें देखिबा सेटा होची यूएसए काहे ना मूल कंप्यूटर एनियाक रो भी डेवलपमेंट हेतला यूएस रे यूएस आर्मी ही सेटा स्पॉन्सर करथिला सो सबु बेले कंप्यूटर क्षेत्र रे बा सॉफ्टवेयर क्षेत्र रे जतले किछि कांसेप्ट आसे यूएस ही आगे रहे तो जहाँ भी हो से आर्पानेट जो तुम कौच आर्पानेट हूँ यूनाइटेड स्टेट बा अमेरिका द्वारा डेवलपमेंट एवं सेठी जो दी जन ना कहली से दी जनकर मिलित आनुकूल्य बा मिलित सहयोग इंटरनेट रो जो कहती जन्मर भित्तिभूमि से ही पड़ी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट ऑलरेडी मु कहि भी सारी इंटरनेट रो फुल फॉर्म कौन ऑप्शन ए intercontinental network, option B internal network, option C interconnected network, option D international network. Which option is the right answer? Internet. Internet रो actually concept होची परस्पर सहित कनेक्शन थिबा बा परस्पर मध्य कनेक्शन थिबा सेटा को हम इंटर कनेक्शन कहू ऑब्वियसली तो इंटर रे गला इंटर कनेक्शन बा इंटर कनेक्टेड नेक्स्ट तमर का आसला ना नेट रूच नेटवर्क सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट रो मुख्य व्यवहारटा कोन ऑप्शन ए शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी ब्राउजिंग वेब पेजेस option C sending and receiving emails option D social networking and option E all of the above what is the major use of internet रो मुख्य व्यवहारटा कोन बा इंटरनेट को मुख्यतः आमे काहे व्यवहार करिथाउ ऑप्शन ए शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी browsing web pages option C sending and receiving emails option D social networking and option E all of the above internet को मैं कहीं व्यवहार करूं तो राइट आंसर इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव इंटरनेट को मैं सबु पई ही व्यवहार करूं इंटरनेट को व्यवहार करी हमें डाटा बा इंफॉर्मेशन को परस्पर भीतर एक्सचेंज करू बा शेयरिंग करू ऑप्शन बी रे कोन करिथाउ डिफरेंट वेब पेज को ब्राउजिंग करिथाउ बा डिफरेंट वेब इंफॉर्मेशन को सर्चिंग भी करा जाय थाए ऑप्शन सी कहा को ईमेल पठेबा बा कहारो ईमेल को रिसीव करिया पई भी व्यवहार करा जाय थाए सोशल नेटवर्किंग जेंति कि तमरो व्हाट्सएप तमरो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम भली जिंस जो कहउछ सब ए सब जिंस गुडाकर मध्य यूज भी करा जाय जहां भी हो इंटरनेट इज द मीडियम ऑफ ऑल दीस थिंग्स सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए फाइल from one computer system to another computer or to a server so that others can see or retrieve is called हमें जो इंफॉर्मेशन रा ट्रांसमिशन करू गोटे कंप्यूटर रु आउ गोटे कंप्यूटर सिस्टम को बा सर्वर को जहा कि अन्य जने देखि भी परिबो एंड सेटा को आवश्यक मुताबिक रिट्राइव भी करि परिबो पुनरुद्धार भी करि परिबो हाले से जो सिस्टम टाकू बा से जो पद्धति टाकू एग्जैक्टली कौन बोली कहा जाए ऑप्शन ए डाउनलोडिंग ऑप्शन बी शेयरिंग ऑप्शन सी अपलोडिंग एंड ऑप्शन डी सेंडिंग ए फाइल द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर और टू ए सर्वर सो दैट others can see or retrieve is called रिट्राइव करिबा रिट्राइव रो ओडिया होजे पुनरुद्धार करिबा ताले एई जो सिस्टम टाको हमें कोन बोली कहिथाउ एग्जैक्टली ए सिस्टम टाको हमें डाउनलोडिंग बोली कहिथाउ डाउनलोडिंग रो ओटे कांसेप्ट कोन ना वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर टू यूजर कंप्यूटर बा क्लाइंट्स कंप्यूटर रिमोट कंप्यूटर रु क्लाइंट कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को आनिया को डाउनलोडिंग करंती एंड क्लाइंट कंप्यूटर रु बा यूजर कंप्यूटर रु इंफॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर को सेंड करिबा को रिमोट कंप्यूटर को सेंड करिबा को अपलोडिंग बोली कहा जाय थाए सो ए क्षेत्र रे जेहेतु हमें ट्रांसमिशन करिबा फाइल टा को कंप्यूटर सिस्टम रु आउटे कंप्यूटर को बा सर्वर रु नुहे सर्वर को सो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट डाउनलोडिंग ओके द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल
to our computer from the internet is called. Just टिके आगु कहि देली सेटा डाउनलोडिंग बोली कहंती ऊपरटा होची तमरो एक्चुअली अपलोडिंग ऊपरटा होची अपलोडिंग एंड एटा होची डाउनलोडिंग बाय द वे प्रिंटिंग मिस्टेक इट द अपलोडिंग एटा होची सर्वर कंप्यूटर को जिबा कोले एटा होची अपलोडिंग ऑप्शन सी हबो एंड एटा जो आछला 9th रे द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल आवर कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट को जिनसटा हम कंप्यूटर पानी को हमें डाउनलोडिंग बोली कहिताउ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू each computer on a network is recognized by a unique प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम जहा कि गोटे इंटरनेट नेटवर्क रे शामिल हुए तार आइडेंटिफिकेशन पाई हमें कौन यूज करू ऑप्शन ए आईपी एड्रेस ऑप्शन बी एचटीटीपी ऑप्शन सी एचटीटीपीएस एंड ऑप्शन डी www each computer on a network is recognized by a unique समस्त किसी ना किसी गोटे थाए अलग अलग थाए ताको कौन कुआ जाए ऑप्शन ए ताको आईपी एड्रेस बोली कहंती बा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोली कहंती ईच मशीन्स कनेक्टेड टू ए इंटरनेट ईच मशीन कनेक्टेड ओवर ए इंटरनेट हैज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बा आईपी नंबर इंटरनेट एड्रेसिंग रे चारटा जिंस थाए आईपी एड्रेस थाए मैक एड्रेस थाए जोटा कोन मीडिया एक्सेस कंट्रोल बा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस एटा थाए डोमेन नेम सिस्टम बा जोटा कोन डीएनएस एवं यूआरएल थाए जहां भी हो जेते मशीन इंटरनेट रे कनेक्शन होंती से मानको समस्त गोटे आईपी नंबर थाए हमें बेले बेले देखुथिबा कोन से गोटे वेब पेज फिटेला लखु जस्ट टिके टास्क बार ऊपर को जो तार जो स्टेटस बार थाए जो ब्राउजर तुम फिटेथिबो लेखुथिबो वेटिंग फॉर द आईपी एड्रेस सब बेले देखिबो आईपी एड्रेस ता तमरो गोटे एई टाइप रो गोटे थिबो आईपी एड्रेस रो गोटे फॉर्मेट ता जनरली एई टाइप रो थिबो जेमति कि 156.210.15 गोटे मनकर सपोज फॉर्मेट ता एबळा थाए an IP address is a unique set of numbers and each numbers can be from 0 to 255 प्रत्येक नंबर ता 0 ରୁ 255 भितर ही रहउथिबो so that is an octet form of 2 to the power 8 2 to the power 8 हेला 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 दुने 32 दुने 64 दुने 128 दुने 256 256 ले मिनिमम ब्रॉडकास्ट सबले यूज करा जे 0.0.0.0 सेटा केबे भी कारण नथिबो मैक्सिमम ब्रॉडकास्ट होची 255.255.255.255 ए टाइप रो थाए किंतु एमती भी कारण नथिबो तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रति आईपी नंबर उडा को ए टाइप रो सेटिंग हेथिबो जेम ओडे कहि तुमको 156.30.201.15 सो दैट इज आईपी एड्रेस बा जोटा कोनती इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सेटा विषय हमें आउ केतलो अधिक भलो से डिस्कशन करबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू a computer communicates with other computers on the internet through गोटे कंप्यूटर कम्युनिकेशन करे गोटे अन्य कंप्यूटर सहित का माध्यम ऑप्शन ए आईपी ऑप्शन बी टीसीपी बाय आईपी ऑप्शन सी एचटीटीपीएस एंड ऑप्शन डी वेब ब्राउजर a computer communicates with other computer on the internet through Option B is the right answer. TCP by IP. TCP माने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP IP माने इंटरनेट प्रोटोकॉल ताले दिस इज द बेसिक प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट इंटरनेट रे जहां भी ट्रांसमिशन होची एई बेसिक प्रोटोकॉल लागी TCP by IP लागी ताले TCP by IP बा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बा इंटरनेट प्रोटोकॉल होची द बेसिक प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेसेजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इंटरनेट रे टीसीपी आईपी भली अनेक गुडा प्रोटोकॉल आहुरी भी यूज करा जाय जेमति कि ईमेल पई तीनटा प्रोटोकॉल यूज करा जाय गोटेला आईएमएपी गोटेला एसएमटीपी गोटे पीओपी तापरे कफर टेलनेट एंड बहुत सारा जिंस अछि छाडो हमें इतना बार को जीवा नहीं मु कहिबा कथा इंटरनेट रो जो बेसिक कम्युनिकेशन करिया पे जो प्रोटोकॉल टा यूज करा जाय ताले फाइल बेसिकली मेंटेन करिबा पई दैट इज द टीसीपी बाय आईपी transmission control protocol by internet protocol so option B is the right answer next question for you what is the full form of HTML ro full form kono very simple thing HTML ro full form
Option A, high transformation language. Option B, high transmission Markov language. Option C, hypertext Markov language. And last option, hypermedia Markov language. Option C is the right answer. Hypertext Markup language, HTML. HTML is a language used to develop and design web pages. आमे इंटरनेट रे जो web page गुडाक देखुचे, web page गुडाक डेवलपमेंट होची HTML द्वारा. ताले HTML रे विभिन्न प्रकार टैग गुडाक व्यवहार करा जाय. से टैग द्वारा इंटरनेट रो सॉरी वेब पेज रे कोनसे कंटेंट्स ऐड करा जाय. कोडी वीडियो क्लिप्स, कोडी ऑडियो क्लिप्स, कोडी लेखा, कोडी पैराग्राफ, कोडी पिक्चर ए सारा जिंस गुडाक फॉर्मेटिंग आउ डिजाइनिंग करबा कोले we can put the various tags to design and develop the web pages. So option C is the right answer, hypertext markup language. Okay, next question for you. A set of rules followed by each computer present on a network is called. A set of rules followed by each computer present on a network is called. जिते रूल्स गुड़ाक आम अच्छी गोटे कंप्यूटर को प्रेजेंट करने नेटवर्क रे गोटे कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन को प्रेजेंट करने नेटवर्क रे ताको एक्चुअली कौन बोली कहंती. ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी डोमेन एंड लास्ट ऑप्शन इज प्रोटोकॉल. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक्चुअली से कांसेप्ट को प्रोटोकॉल बोली ही कहंती. प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स that can define how the computers will communicate with each other. Internet रो जो data transmission होची, there are various protocols. विभिन्न protocols गुड़ा कासे. Just टिके आगु तुम कहूतली email पाई तीनटा protocol जेंति कहिली, file transfer पाई जेंति कहूतली TCP by IP, सेमति web browser और web server से communication करिया पहले भी गोटे HTTP गोटे protocol. जहाँ भी हो, there are various protocols. Protocols माने that is the set of rules that can define how computers will communicate with one another. Okay, so option D is the right answer, protocol. Next question for you. Inventor of www. www रा स्रष्टा किए? Option A, Bill Gates. Option B, Lee N. Peck. Option C, Tim Berners-Lee. And option D, Tom Berners-Lee. Who is the developer of www? www वर्ल्ड वाइड वेब रो स्रष्टा किए? वर्ल्ड वाइड वेब रो स्रष्टा होसंदी टिम बर्नर्स-ली. एक्चुअली सन नामक गोटे संस्था जहा कि प्रथम वेब साइट रो जदी ना केबे कि तुमको पचारे ता ना होची son.ch. तो सन संस्था नामक संस्था पई टिम बर्नर्स-ली एटा डेवलपमेंट प्रथमे करथिले. ओके, सो फादर इज द www, father of the www is Tim Berners-Lee. Option C is the right answer. Next question for you. Internet is governed by several voluntary organizations such as Internet अनेक गुड़ाए voluntary organizations सहित मैनेज होता है बा ऑर्गेनाइज होता है. ऑप्शन ए IAB, Internet Architecture Board. ऑप्शन बी IETF, Internet Engineering Task Force. Option C, Internet NIC, and option D, all of the above. Internet is governed by several voluntary organizations. बहुत गुड़े voluntary organization द्वारा इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करा जाए, गवर्न करा जाए. तो सी जो संस्था मानक भितरे इमानक भितर को टर्मटा एक्चुअली ट्रू. All the organizations, all the volunteers can be helped to organize the internet. समस्ते इंटरनेट को चलेबा पई बा समस्त इंटरनेट पछरे समस्तंगर हाथ अछि बा समस्तंगर अवदान अछि. तो ऑप्शन डी, all of the is the right answer. Next question for you. What is the full form of W3C? W3C रो full form कोन? ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन. वर्ल्ड वाइड वेब साइबर. ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब constitution. And option D, world web wide constitution. कोड होची आ भितर राइट आंसर W3C. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, W3. W3 माने तीन थरो W, जेमति कि गोटे हला वर्ल्ड, W रेला वाइड एंड W रेला वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब W3, C माने होची consortium. So option C is the right answer. Next question for you. A dash that contains billions of documents
in the form of web pages is one of the most popular services over internet. A dash that contains billions of documents in the form of web pages is one of the most popular services on internet. एमानक भितर कौन से जिनसटा जहाँकि बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को वेब पेज फॉर्मेट रे रखी पारुची आउ जोटा को हमको कि सब से करी भी पारुची से कौन से सिस्टम दा सर माने हमको परसे दोची बा जोगी दोची ऑप्शन ए वेब ऑप्शन बी वेब इंटरनेट ऑप्शन सी टेलनेट and option D FTP. Anyone? The right answer is option A, that is web. Web is a system of interlinked documents known as web pages. Web होची एभली गोटे जिंस जहा कि परस्पर सहित जो लिंक थिबा जिंस को हमें नै कहि थाउ जोटा को वेब पेज बोली कहि जाऊ आदर इंटरनेट रे जो जिंस गुडा आम व्यवहार करू ताको गोटे वेब कंटेंट्स बोली कह जाए आउ से जो वेब कंटेंट्स गुडा आम वेब ब्राउजर द्वारा ही एक्सेसिंग करू जहाँ भी हो जो फॉर्मेट रे कंटेंट्स गुडा विभिन्न डॉक्यूमेंट गुडा गोटे पर्टिकुलर फॉर्मेट रे अछि सेटा को आम वेब कंटेंट्स बोली कहू तो आम इंटरनेट आ वेब भितर कंफ्यूज होबार नाही इंटरनेट इज द मीडियम एंड वेब इज द एप्लीकेशन इंटरनेट होची माध्यम इंटरनेट माध्यम रे जो कंटेंट्स गुडा आम व्यवहार करू एप्लीकेशन गुडा व्यवहार करू दैट इज नोन एज द वेब कंटेंट्स सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू to access web pages an URL is required to access a web page an URL is required what is the full form of URL आमे गोटे URL को accessing करबा को हेले हमको URL दरकार पड़े URL दरकार पड़े गोटे वेब पेज को accessing करिया कोले ताले से जो URL रा माने कोन माने मु तुमको जस्ट टू हिंट्स भी दे देबी एटा होची गोटे प्रति वेब कंटेंट्स जहा कि इंटरनेट रे हमको मिलुची समस्त गोटे सेपरेट आइडेंटिफिकेशन अच्छी समान फॉर्मेट रे समस्त गोटे गोटे आइडेंटिफिकेशन अच्छी आउ सी यूआरएल भी तीनटा पार्ट भी थाए गोटे होची एक्सेस मेथड जेमति कि हमें लिखू http बा https तापर कंप्यूटर लोकेशन जेमति कि लिखा हुए www.microsoft.com एवं लास्ट को फाइल लोकेशन जेमति कि index.html तले ए जो एई भली प्रत्येक कंटेंट्स रो सेपरेट आइडेंटिफिकेशन अछि ताले मु कहिबा कथा से यूआरएल रो फुल फॉर्म टा कोन ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन एंड ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन द राइट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यूआरएल रो फुल फॉर्म ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू A world wide web contains billions of web pages. A world wide web बा www billions of web pages बा अनेक गुडा वेब पेज को एकाठी करी रखी छी ताले को ऑप्शन ता पई राइट ए residing in several computers option B created using HTML option C residing in many computer systems linked together using HTML and option D both B and C A world wide web contains billions of web pages ताले आ भितर कोटा होचे राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब रे आमे जो बिलियंस ऑफ वेब पेजेस कोचे बा वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स नोन एज वेब पेजेस बोली कहूचे www होचे एभली गोटे पद्धति जोठी कि अनेक गुडा वेब पेज को एकाठी करी रखाई छी सो ऑप्शन डी इज द ता पई राइट आंसर बी भी हबो सी भी हबो created using HTML by hypertext of markup languages सोडा डिजाइनिंग करा जाय थाए and residing in many computer system linked together कहि छै ना अनेक गुडा वेब पेज को एकाठी करी रखा जाय सो ऑप्शन बी एंड सी दीटा जा कहूची ठीक सो ऑप्शन डी इज द appropriate answer next question for you an interconnected network exclusively used within organizations such as banking business firms it is that uses web technologies or sharing data or information internationally by internally is called interconnected network गोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आमे जहा कहूचे जहा कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर मैनेजमेंट हुए जहा बैंकिंग क्षेत्र रे बिजनेस क्षेत्र रे सब जगह रे व्यवहार करे वेब टेक्नोलॉजी को
नेकी डाटा बा इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करे एग्जैक्टली सेटा को हमें कौन बोली कहू ऑप्शन ए प्रोटोकॉल ऑप्शन बी इंट्रानेट ऑप्शन सी इंटरनेट एंड ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट तुम यही भाई सब एग्जाम मानक क्वेश्चन आसे बहुत सहज लगे कंप्यूटर टा मु एगेन एंड एगेन कहे कंप्यूटर केबे भी सहज नुहे ता टेक्निक जे गोटे थर बुझीगला ताकू सब जिन सहज लगे आउ जे टेक्निक ता न बुझी पारे ताकू बहुत कष्ट लगे बहुत सिंपल टर्म गुड़ाक टिके खाली बुझीबार अछि टिके टिके फरक आन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क परस्पर सहित लिंक थिबा अनेक गुडा नेटवर्क को नेके तयारी करा जायथे जहा कि विद ऑर्गेनाइजेशन मान द्वारा व्यवहार करा जाय बैंकिंग सेक्टर हो बिजनेस सेक्टर हो व्हाटएवर मे बी से जो टेक्नोलॉजी टा व्यवहार करंती इंफॉर्मेशन को परस्पर भितर शेयरिंग करिवा पई सेटा को हमें कोन बोली कहिताउ जेमति कि धरि नियो तमे गोटे शॉपिंग करिया को जाउछो शॉपिंग मॉल को तम बैंक क्रेडिट कार्ड को व्यवहार करिकि शॉपिंग करूछो ताले बैंकिंग सेक्टर तो गोटे नेटवर्क व्यवहार करथिबो एंड शॉपिंग मॉल तो आउट नेटवर्क को व्यवहार करथिबो ताले एटा केमिति पॉसिबल होउची जे से माने परस्पर सहित इंटर कनेक्शन हे जाई पारुसंती बा एपड बैंक अकाउंट रो पैसा जेती कटुची सेही अनुसार तम ट्रांजैक्शन बा जिंस तुमको डिलीवरी करा जाउची बा तुमको दिया जाउची केमिति एटा संभव होउची दैट टेक्नोलॉजी व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी दैट टेक्नोलॉजी एक्चुअली ऑप्शन बी इंट्रानेट बोली कहंती इंटरनेट इज दिस थिंग एंड इंट्रानेट इज दिस थिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू a computer network that is used to control the access from outside of an organization's internet is called गोटे कंप्यूटर जहा की कंट्रोल हुए असेसिंग हुए आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क बा आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाहर ताले ताकू कोन कहंती ऑप्शन ए इंट्रानेट ऑप्शन बी फ्रेम ऑप्शन सी एक्सट्रानेट एंड ऑप्शन डी आईएसपी एक्चुअली ताको ऑप्शन सी कहंती एक्सट्रानेट इंटरनेट इंट्रानेट एक्सट्रानेट ए विषय आमे केबे पर टिके भलो से डिस्कशन करिवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जहा की वेब पेज गुडा को देखिया पय आमे व्यवहार करू जदि सेटा नथिबो ताले वेब पेज गुडा आमे करि परिबा नै चलै परिबा नै हम कंप्यूटर रे कोन से सॉफ्टवेयर टा रहिबो जहा फल रे कि आमे वेब पेज गुडा को देखि परिबा बा वेब पेज गुडा को ब्राउजिंग करि परिबा व्हाट इज दैट थिंग इज नोन ऑप्शन ए साइट ऑप्शन बी होस्ट ऑप्शन सी लिंक एंड ऑप्शन डी इज ब्राउजर दैट स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज ब्राउजर ताको वेब ब्राउजर बोली भी कहंती वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द पेजेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब वेब ब्राउजर contacts a web server and sends the request for the information web browser होची एभली गोटे स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जहा कि वेब सर्वर भितरु वेब पेज को एक्सेसिंग करिया पय व्यवहार करा जे वेब ब्राउजर द्वारा कोनोसी गोटे रिक्वेस्ट वेब सर्वर पाके पहुंची पारे देन इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर एंड डिस्प्लेज इट ऑन यूजर्स कंप्यूटर तापर वेब ब्राउजर कोन करे यूजर रिक्वेस्ट अनुसार इंफॉर्मेशन वेब सर्वर पाके पहुंचेला परे वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करिकि यूजर कंप्यूटर रे डिस्प्ले कराए सो वेब ब्राउजर इज दैट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी sends request from the user's computer to server then it receives the information and displays it on a user's computer so the communication पाई जो सॉफ्टवेयर स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज करो that is the web browser examples of the web browser as the your Google Chrome Mozilla Firefox Opera Netscape Navigator Microsoft Edge there are many more different type of web browsers can be used okay next question for you every computer machine host on the internet network has every computer machine host on the internet network has option A similar IP address option B unique 15 digit number option C unique IP address option D the same IP address जेते कंप्यूटर मशीन होस्ट करूची इंटरनेट नेटवर्क रे सेमानकर कोन थाए सिमिलर आईपी एड्रेस थाए ऑप्शन बी यूनिक 15 डिजिट नंबर थाए ऑप्शन सी यूनिक आईपी एड्रेस थाए एंड ऑप्शन डी द सेम आईपी एड्रेस थाए व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूनिक आईपी एड्रेस जे ऑल मशीन्स कनेक्टेड अच्छा ए सब जिंस होची इंटरनेट एड्रेसिंग भीतर आसे
आम इंटरनेट एड्रेसिंग भितर मुख्यतः चारटा जिनस को प्राधान्य दिया जाए फर्स्ट होउची तमरो आईपी एड्रेस सेकंड होउची तमरो जो कहंती मैक बा मीडिया एक्सेस कंट्रोल नेक्स्ट रे कहंती हमरो डीएनएस द डोमेन नेम सिस्टम एवं लास्ट होउची यूआरएल जहां भी हो से कहूची जे ऑल मशीन्स कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट हैज एन यूनिक आईपी नंबर आईपी एड्रेस जिते मशीन इंटरनेट सहित कनेक्टेड होतिबो तार गोटे आईपी नंबर थिबो देखिबो तमे एयरटेल सहित कनेक्शन की नेट चलाउछ तम आईपी नंबर गोटे आसो सेही सेम जिंस को तमे आउ गोटे नेटवर्क मन बीएसएनएल सहित कनेक्टेड हे गेलो आईपी नंबर चेंज हे जिवो ताले सब मशीन रो जहां भी कनेक्टेड होंती आईपी नंबर सब चेंज चेंज हेबो सो यूनिक आईपी एड्रेस जो ऑप्शन सी होउची राइट आंसर समस्ते चारिटा सेट रो नंबर थांती प्रति नंबर 0 रु 255 भीतर ही थाए एवं दे आर सेपरेटेड विथ द सेपरेटेड डॉट से माने डॉट द्वारा सेपरेट ही थांती तो ताको ऑक्टेट फॉर्म थाए प्रति नंबर गोटे ऑक्टेट फॉर्म रे थाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू an in identifier that sends and receives information across the internet is called मु सब बेले कहूची कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान करे एमती जिंस को बुले की ही पचारि थाए तो तुमको संपूर्ण आवर रहिएको पड़िबो क्वेश्चन को ठीक से बुझिया पड़िबो ना ऑप्शन को चूज करियो पड़िबो बिकॉज़ देयर आर माइनस मार्किंग सेठी माइनस मार्किंग होची ओके an identifier that sends and receives information across the network is called जो आइडेंटिफायर रिक्वेस्ट सेंड करिथा इंफॉर्मेशन को इंटरनेट रे रिसीव करिया पई यूज करा जाई थाए एग्जैक्टली ताको हमें कोन बोली कहिथौ आइडेंटिफायर टाइप ऑप्शन ए आईपी एड्रेस ऑप्शन बी www ऑप्शन सी नेटवर्क and last option is URL and the identifier that sends and receive information across the internet is called ताको एग्जैक्टली हमें आईपी एड्रेस बोली कहू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोली कहू so option A is the right answer next question for you which of the following statement is not correct about IP address इमानक भितरु को स्टेटमेंट ता IP एड्रेस पई ठीक नुह ऑप्शन A IP address is always unique for each computer option B an IP address consists of 4 bytes or 32 bits each of which can be numbered from 0 to 255 for browsing or sending an emails IP addresses are assigned to the computers is required option D all of the statement are correct or the right option D is the right answer ता माने हमें बुझुचे जे आईपी एड्रेस पई ए पूर्व समस्त स्टेटमेंट गुडा को बा सारा स्टेटमेंट गुडा को होची ठीक IP address is always a unique for each computer IP address ता सबु बेले सबु कंप्यूटर पई एका फॉर्मेट रे थाए माने चारिटा सेट रो नंबर जहा कि परस्पर थारु डॉट द्वारा सेपरेट हे थाए an IP address consists of 4 bytes गुडा IP address ता सब बेले 4 bytes बा 32 bits नंबर जहा कि 0 रु 255 भीतर थाए जस्ट टिके आगु तुमको रिमाइंड करूथली आ ब्राउजिंग सबु बेले कला बेले ईमेल हो बा जहा भी हो आईपी नंबर निश्चित भाबे असाइनमेंट कराइथबो हला हमें जानू छे केमती जे एई कंप्यूटर रे से प्रॉब्लम हैला एई आईपी एड्रेस को से यूज करथला केमती जणा पड़ुची कारण सब आईपी नंबर गुडा को सबुठार सेपरेट थाए सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज्ड बाय वेब ईमेल एंड गेमिंग सर्वर्स वो आईपी एड्रेस का साधारणतः सबु बेले वेब कंटेंट्स गुडा को पई ईमेल पई बा गेमिंग सर्वर पई के बा गेम जो हमें खेलुचे ता सर्वर पई के असाइनमेंट हेते ऑप्शन ए डायनामिक ऑप्शन बी स्टैटिक option C Mac and option D both A and B ऑप्शन बी स्टैटिक आईपी एड्रेस को व्यवहार कर जाए ये होचे गोटे प्रकार आईपी एड्रेस जहा कि केबे चेंज हुए नाही वंस इट इज असाइन्ड टू ए कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क माने जेमति हम गोटे गेम खेलुचे से आईपी एड्रेस ता शेयर होय काहे कि ना हमें यदि चेंज करि देबा ताले सब एपट सेपट हे जिवो साधारणतः सेथि पई स्टैटिक आईपी एड्रेस को ए सब क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज्ड बाय द कंपनीज एंड बिजनेस फर्म्स एमानक भितरु को आईपी एड्रेस ता कंपनी आ बिजनेस फर्म मानक पई साधारणतः व्यवहार करा जाय ऑप्शन ए स्टैटिक ऑप्शन बी मैक ऑप्शन सी डायनामिक एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी एमानक भितर को आईपी एड्रेस ता कंपनी और बिजनेस फर्म मानक पई व्यवहार करा जाय ऑप्शन सी इज द राइट आंसर डायनामिक
an IP address changes time to time, devices log into the network. एथरे हमें लॉगिन करिचे तो गोटे IP address आसीबो पुणी आउट तर लॉगिन कला को IP address चेंज हेजिबो गेम मान को क्षेत्र में स्टैटिक IP address व्यवहार करा जाय किंतु बिजनेस फर्म कंपनीज ए सब क्षेत्र रे सब बेले डायनामिक माने चेंजेबल IP address व्यवहार करा जाय सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया very interesting thing wikipedia रो फादर किए ऑप्शन ए जॉन स्मिथ ऑप्शन बी अल्बर्ट ब्राउन ऑप्शन सी जिमी वेल्स एंड ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस हु इज द फादर ऑफ विकिपीडिया हमें सब बेले फॉलो कर दो विकिपीडिया को विकिपीडिया रे कोन आसुची से जो विकिपीडिया रो फादर किए ऑप्शन ए जॉन स्मिथ ऑप्शन बी अल्बर्ट ब्राउन ऑप्शन सी जिमी वेल्स and option D Stephen Hawkins. Option C is the right answer. Jimmy Wales is the father of Wikipedia. Okay, next question for you. Which of the following plays an important role in developing common protocols over the evolution of www? www रो evolution पछरे जो common protocol play करूची important role सेटा कोनटा? Option A internet, option B www consortium and option C internet architecture board and option D none of these. Which of the following plays an important role in developing common protocols for evolutions of www? www रो evolution पछरे कहार मुख्य भूमिका रहुची? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर www consortium ताले तारि द्वारा ही ए जिंसडा ही परुची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन ए कंप्यूटर एमान को भितरु को डिवाइस ता निश्चित भाबे दरकार पड़े हमें जदी इंटरनेट रो कनेक्शन करिवा को चाहूतिबा ऑप्शन ए मोडेम ऑप्शन बी रूटर ऑप्शन सी आईएसपी Which device is required to establish an internet connection on a computer? Option A and B both are right answer. Modem, that is known as the MO modulator, DM demodulator. So modem that converts the analog form of signals to digital form and vice versa. So modem होची एबोली गोटे जिंस जहाँ की एनालॉग फॉर्म रो इंफॉर्मेशन को डिजिटल को कन्वर्ट करता है एंड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट करता है सो दैट इज अ स्पेशल डिवाइस कैरिड आउट बाय द कम्युनिकेशन बिटवीन द टेलीफोन लाइंस एंड कंप्यूटर ओके सेटा भी दरकार एंड हमर बी रूटर भी दरकार पड़े ए दुईटा जाक दरकार पड़े हमर जदी केबे एस्टैब्लिशमेंट करबा को चाहूतिबा कनेक्शन इंटरनेट रो ओके a device that is used to convert digital signals data into analog form and vice versa just ठीक है गोटे जिंस को एक्सप्लेनेशन कला बेल को ता पर क्वेश्चन टा भी ता लिंक रहउची ऑब्वियसली तुम माने भी आंसर टा भी क्लियर हे जाइथिबो तो सेटा को मोडेम तो मु कहि सारिछि ऑलरेडी तो मोडेम रो काम होला एनालॉग फॉर्म रो इंफॉर्मेशन को डिजिटल को कन्वर्ट करबा एंड डिजिटल फॉर्म रो डाटा को एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट करबा हमें जानि छे कंप्यूटर रे सब किछि जिंस 01 शैली रे रिप्रेजेंट हुए सो सर्वर पाखे रिक्वेस्ट आम फॉर्मेट जाई पहुंचे सर्वर रे डिकोडिंग हला बेले को सेटा 01 शैली रही थाए पुणी 01 शैली रे प्रोसेसिंग हला पर आम फॉर्मेट रे से एनकोडिंग करी आम पाखे पहुंची थाए जहां भी हो तो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग बा एनालॉग फॉर्म रो सिग्नल डिजिटल को कन्वर्ट होबा डिजिटल फॉर्म रो इंफॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट होबा दैट स्पेशल डिवाइस इज नोन एज मोडेम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी आईएसपी लो फुल फॉर्म कोन वेरी सिंपल थिंग इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑप्शन डी इंट्रा सर्विस प्रोवाइडर बेले बेले बहुत सिंपली जिंस कंप्यूटर जना पड़े कंप्यूटर भी सेमिति किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन आसे नै बहुत कॉमन जिंस आसे बट ता कांसेप्ट ओडा को जे प्राइमरी स्टेज रे बुझी दिए से सब किछि आंसर करि पारे बट जे कांसेप्ट टिके भी लूज थाए से आंसर ओडा दे पारे वेरी सिंपल थिंग हेइतो प्रति मोमेंट रे प्रति डे रे सब बेले से यूज करथिबो देखुथिबो बट ता सहित जदी सेति के अक्वेंटेड नथिबो से सब तार भूल ही जिवो आउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सबुठारो वाइटल होचे माइनस मार्किंग न होबा एनकरी प्रतिटी जिंस को हम ठीक से पढिबा दरकार ओके ताले मु कहबा कथा आईएसपी रो फुल फॉर्म ता एग्जैक्टली कोन
Option B is the right answer. Internet service provider. Okay. Next question for you. Internet address is internet address टा गोटे कौन 8-bit number. Option B 16-bit number. Option C 32-bit number. And option D none of these. जो इंटरनेट रो एड्रेस तमे कहउछ आईपी एड्रेस कहउछ सेटा केमिति फॉर्मेट रो Option C is the right answer. That is a 32-bit number. 32-bit number सेटा. And each number from the in the format of 2 to the power 8. 2 to the power 8 माने 2 दुगुणे 4 दुगुणे 8 दुगुणे 16 दुगुणे 32 दुगुणे 64 दुगुणे 128 दुगुणे 256 सबु तक 2 to the power 8 माने गोटे ऑक्टेट फॉर्म रे थाए. देखिबो जेते भी थिबो मिनिमम ब्रॉडकास्ट 0.0.0.0 and maximum broadcast होउची 255.255.255.255 and प्रति नंबर गुडा तार भितर थिबो तमे कहली जेमती इंटरनेट कोन से वेबसाइट जे फिटो थिबो देखिथिबो केबे ब्राउजर लेखुथबो वेटिंग फॉर द आईपी एड्रेस ओटे एबळे लेखुथबो 156.128.20 ता माने बुझिया को पड़िबो जे प्रति नंबर 255 भितर ही थिबो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इन https s means आमे बेले बेले वेब ब्राउजिंग करू वेब ब्राउजिंग बेले ब्राउजर सॉफ्टवेयर रे बेले बेले http लिखा ही थाए बेले बेले https भी आसे हमहु सेटा http न देले भी आपे आपे पळे आसे काइना http रो काम होची ये कि सेही प्रोटोकॉल जरिया रे वेब ब्राउजर वेब सर्वर पाके ता रिक्वेस्ट पहुंची थाए तेनु करी हमें http न देले भी दैट इज ऑटोमेटिकली आस्ता http:// आपे आपे पळे आसे सो मु एते कथा कहू नै मु केवल कहूची https जो लेहे थाए https रे जो s रो मानेटा कोन ऑप्शन ए सीक्रेट ऑप्शन बी सिक्योर ऑप्शन सी सॉकेट एंड ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर. The right answer is option B secure. http बा hypertext transfer protocol secure. हमें बेले बेले देखु ना वेब पेज रे एंते आसेनी का https://www.microsoft.com/index.html एटा तो कंप्लीट वेब एड्रेस बा यूआरएल तमे कहि परिबो और http तार जोटा कहंदे एक्सेस मेथड बा सेही प्रोटोकॉल जरिया एक्सेसिंग हुए तो बेले बेले सेठी जो एस आसे ता माने होची सिक्योर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which device is required to connect multiple computers on same internet network. Which device is required to connect multiple computers on same internet network. एमानक भितरु को डिवाइस ता दरकार पड़े मल्टीपल कंप्यूटर को गोटे सेम इंटरनेट नेटवर्क रे कनेक्शन करिबा पई. ऑप्शन ए मोडेम ऑप्शन बी हॉटस्पॉट ऑप्शन सी आईएपी ऑप्शन डी रूटर. Which device is required to connect multiple computers on same internet network. हम तो बहुत सारा नेटवर्क डिवाइस विषय जानी छे हब रूटर स्विच गेटवे बहुत सारा जिंस जानी छे किंतु मु कहिबा कथा एग्जैक्टली से जिंसटा कोन हमर दरकार पड़े जहा कि मल्टीपल कंप्यूटर को ओटे सेम इंटरनेट नेटवर्क रे बसई देई पारे. ऑप्शन डी रूटर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी. हमें जदी से एनआईसी कार्ड ता तम कंप्यूटर रे न लागि छि ना तमे कोनोसी नेटवर्किंग करि परिबो नाही से कंप्यूटर सहित ताले से जो एनआईसी पाई कि हमर जो दिया जाय छि एनआईसी से एनआईसी द फुल फॉर्म ता एक्चुअली कोन. ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरनेट कार्ड ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑप्शन डी नेटवर्क इंट्रा कार्ड. एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो एनआईसी पाई जो एड्रेस दिया जाए ताको कहनी मैक मैक माने होची मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मैक एड्रेस केबे भी चेंज हुए नाही. एनआईसी जतल तयारी हितबो ता पाई मैक एड्रेस जहा तयारी हितबो एटा फिक्स. हमें जतल जो साइबर क्राइम होची जणा पडुची केंदे अमुको डिवाइस रो हितला तो एनआईसी टा होची सबल फिक्स रहे एंड आईपी एड्रेस द्वारा भी जाना पड़े इंटरनेट प्रोटोकॉल से को एसेट टा यूज करथिला बा को प्रोटोकॉल टा यूज करथिला. ओके हमें ए प्रोटोकॉल बा ए सब डेप्थ विषय को आउ केतरा डिस्कशन करबा वर्तमान कॉमन जिंस हमें प्रोसीडिंग करबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए यूनिक नेम यूज्ड इन द यूआरएल्स दैट इज आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड. ए यूनिक नेम जहा को व्यवहार करा जे यूआरएल को आइडेंटिफाई करिया पई वेबसाइट में कहली इंटरनेट रो बहुत सारा जिंस हमें यूज करी थो
जेमती कि आईपी एड्रेस डोमेन नेम यूआरएल बा जोटा कहछ डीएनएस यूआरएल मु कहबा कथा a unique name used to the URLs that identify the website को आइडेंटिफाई व्यवहार करे ता कोन कहंती एक्चुअली प्रैक्टिकली आमे आईपी नंबर तो मन रखी परिबा नै आमे तो सिंपली गोटे फोन नंबर मन रखी पारु नै तो आईपी नंबर केमती मन रखिबा तो आईपी नंबर को मन न रखी हबो बोली गोटे सिस्टम डेवलपमेंट करा जाईछि जहा कि तमे जतले सेही जो जिंसडा यूज करि दबो से संगे संगे सेही रिलेटेड आईपी एड्रेस ता कोन से ताकू सर्च आउट कर दो फाइंड आउट करि दबो ताले मु कहबा कथा दैट सिस्टम व्हाटएवर दैट सिस्टम इज नोन एज ऑप्शन ए डोमेन नेम ऑप्शन बी आईपी ऑप्शन सी टीसीपी एंड लास्ट ऑप्शन इज होस्ट एक्चुअली से सिस्टम ताको कहंती डोमेन नेम सिस्टम बा डीएनएस डोमेन नेम जेमती डोमेन नेम होची दुई प्रकार कोटे दिया जाय कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम आ गोटे दिया जाय जेनेरिक डोमेन नेम गुडा को सबले 3 लेटर एब्रिविएशन होइतला बळे कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम गुडा को सबले 2 लेटर एब्रिविएशन होइଥାଏ ताले जेनेरिक डोमेन नेम गुडा केमती होइଥାଏ .com फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस .org फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस .gov फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस .org from the non-profit organizations, .biz for the business organizations, like that. And bele country specific code use kara jay jemti ki .in for the India, .uk for the United Kingdom, .us for the United States, .pk for the Pakistan. jaha bhi ho, that is known as the domain name system, DNS or domain name. Option A is the right answer. Next question for you: a collection of publicity accessible interlinked web pages that share a common domain name is called. A collection of publicly access interlinked pages that share a common domain name is called. Option A website, option B web contents, option C hypertext, and last option is search engines. A collection of publicly accessible interlinked web pages that share a common domain name is called. Actually ताको हमें गोटे वेबसाइट बोली कहिथौ website is like a book, just a book has many pages, a website is made up with many web pages. जेमती बहिर अनेक गुडाय पृष्ठ थाए ठीक सेमती गोटे वेब पेज अनेक गुडाय गोटे वेबसाइट अनेक गुडाय वेब पेज को नहीं तैयारी हिताय तारले इंटरलिंक्ड परस्पर सहित लिंक थिबे आमे देखिथिबा बेले बेले वेब पेज भितरे अनेक जगह रे हाइलाइटेड वर्ड थाए बटन्स थाए पिक्चर्स थाए जहा द्वारा आमे क्लिक कर लागु से हमको आ गोटे वेब पेज भितर को नहीं जाय ताले से सेही कथा कहिछि ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरनेट वेब पेजेस जहा कि लिंक थिबो ऑब्वियसली सेटा को हमें वेबसाइट बोली ही को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वेब पेज एमान को भितर को स्टेटमेंट ता हमर वेब पेज पई ठीक नुह ऑप्शन ए वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर ऑन www ऑप्शन बी static web page contains fixed information to visitors that are not frequently changed. Option C, in a dynamic web page, information frequently changes. And option D, all of the above are correct. Which of the following statement is not correct about web page? इमान को भितर को statement टा web page पई ठीक नुह वेब पेज पई ए प्रतिटी स्टेटमेंट होची ठीक कोन सी स्टेटमेंट भी भूल नाही वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर ऑन द www ऑब्वियसली www रे ही वेब पेज उडा थाए तो वेब ब्राउजर सेटा डिस्प्ले कराए राइट दिस स्टेटमेंट स्टैटिक वेब पेजेस कंटेन्स फिक्स्ड इंफॉर्मेशन टू विजिटर्स दैट आर नॉट फ्रीक्वेंटली चेंज हम कहली ओटे गेमिंग वेबसाइट सेटा सब बेले समान से चेंज हो नै तमे जतले भी जो डिवाइस रे करो तमो आईडी एडा सब समान रही तो सेटा होची स्टैटिक वेब पेज ताल ता पई भी से इंफॉर्मेशन ठीक अछि इन ए डायनामिक वेब पेज इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली चेंज जेमते कहली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पई गवर्नमेंट जा भी हो एडा पर चेंज हेता तो सेगुडा कहूची हमर कोन हुए ना एटा भी वेब पेज पई राइट ताले कोटा भी भूल होय ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस इन कंप्यूटर नेटवर्क मु रिपीटेडली भी ऑलरेडी कहि सारलानी
DNS ର actually full form ଟା କଣ? Option A domain name system, option B decimal number system, option C domain numeric system and option D dual name system. बहुत बहुत सहज लगे, बहुत बहुत कष्ट जिनस गुड़ाक भी टर्म गुड़ाक अब्रिविएशन गुड़ाक निहाती भाव मन रखा दरकार. What is the full form of DNS? DNS रो actually full form computer network पाई कौन? Option A is the right answer. Domain name system जो टिके आगुर कहउतली कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम रे .in.uk टाइप रो आउ जेनेरिक डोमेन नेम रे .com .org .biz .net .gov .org whatever may be .edu whatever may be. Okay, next question for you. In a computer .com .edu .gov and .net are examples of गोटे कंप्यूटर रो जो क्षेत्र रे .com .edu .gov एवडा हम व्यवहार कर कहार एग्जांपल. ऑप्शन ए टैग रो, ऑप्शन बी रो प्रोटोकॉल्स रो, ऑप्शन सी रो टॉप लेवल डोमेन नेम्स रो, ऑप्शन डी होची आईपी एड्रेस रो. मो बहुत थर भी कहि सारलानी एटा को. इन ए कंप्यूटर .com .edu .gov एवडा सब कोन एक्चुअली एवडा टॉप लेवल डोमेन नेम बा जेनेरिक डोमेन नेम बोली कहंती. टू लेटर होइतिले सेडा कहउछ कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम बा लो लेवल डोमेन नेम बोली कहंती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंस इज नॉट अब्रिविएटेड फ्रॉम द कंट्री? व्हिच इज द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशंस नॉट अब्रिविएटेड टू द कंट्री? माने एमान को भितर को डोमेन नेम टा कोन से कंट्री को स्पेसिफाई करे नाही. A.in, option B .us, option C .com .uk. It's very very simple thing. Option C होची राइट आंसर. .com टा मु तमु कहली जे एटा होची टॉप लेवल डोमेन नेम बा जेनेरिक डोमेन नेम. आउ अन्य उडा तो .in तो इंडिया पाई, .us तो होची अमेरिका पाई, यूनाइटेड स्टेट्स, .uk तो इंग्लैंड पाई. ऑब्वियसली .com टा गोटे जेनेरिक डोमेन नेम बा टॉप लेवल डोमेन नेम जोटा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे व्यवहार करछे. ए गोटा कहीं होची एक्सेप्शन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इंटरनेट डिफरेंशिएट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ. इंटरनेट गोटे कंप्यूटर को आ गोटे कंप्यूटर थारु पृथक करे, भिन्न करे को क्षेत्र रे? ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी डोमेन नेम्स, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस एंड ऑप्शन डी टीसीपी. Internet differentiate one computer from another computer on the basis of. Option B is the right answer. Domain name. जेमति कि .com व्यवहार करछे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मान को पाई. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो माने हिथिबे जो मन को मुख्य उद्देश्य हला बिजनेस करिबा, लाभ क्षतिर हिसाब करिबा, समानकर डोमेन नेम रे समान सबले .com व्यवहार करंती. शिक्षा प्योरली शिक्षा संबंधी जिंस सेमान सब डोमेन नेम रे .edu व्यवहार करंती. सेमती जो माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बा जो मान को मुख्य उद्देश्य हला सेवा जोगेबा सेमाने डोमेन नेम रे .org व्यवहार करंती. जो मानकर विशेषकर सरकारी संस्था माने सेमान डोमेन नेम रे .gov व्यवहार करंती. प्योरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सेमाने सब डोमेन नेम रे .biz व्यवहार करंती. जो ऑर्गेनाइजेशन गुडा को सीधा सड़क इंटरनेट बा नेटवर्किंग रिलेटेड काम सहित इन्वॉल्व सेमान डोमेन नेम रे सब .net व्यवहार करंती. सो डोमेन नेम एक्चुअली जिनसटा जहा कि गोटे कंप्यूटर थारु आ गोटे कंप्यूटर को पृथक कर दिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम्स इज यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? एमान को भितर को डोमेन नेम टा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पई व्यवहार करा जाय? मु रिपीटेडली भी कहि सारलानी. ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .in, ऑप्शन सी .edu and option D .inst. .edu is the right answer. Option C is the right answer. .edu व्यवहार करा जाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पान. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A computer that is used to store data or information for users on the internet is called. A computer that is used to store data or information for users on the internet is called. Option A web server, option B web client, option C web database and option D web application. A computer that is used to store data and information for users on the internet is called.
Option A, web browser. Option B, web client. Option C, web database. And option D, web application. Option A is the right answer. ताको web server बोली कहंदी. Web server ही डाटा गुडा स्टोर करे, इंफॉर्मेशन गुडा स्टोर करे यूजर पाई. यूजर जेतबेले चाहे ता भितर ही इंफॉर्मेशन असेसिंग करे. सो वेब सर्वर, वेब क्लाइंट. वेब सर्वर माने सर्व रहिछि सर्वर. आमे बुझी कि जाउछि कहू ने सर्व कर दियो. सर्व मान होछि परसि देबा. ताले इन रिलेशन टू वेब, सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट मेक्स वेब कंटेंट्स अवेलेबल थ्रू इंटरनेट सर्विसेज. सर्वर होछि एई बोले गोटे कंप्यूटर जोटी को वेब कंटेंट्स गुडा अवेलेबल अछि जहा कि इंटरनेट सेवा माध्यम रे आमे पाउछि. सर्वर सहित जो माने कनेक्टेड होंदी ताको गोटे क्लाइंट बोली कहंदी. तो वेब सर्वर, वेब क्लाइंट. जेंति आमे मोबाइल फोन रे चलेले, नेट चलेले, आमे गोटे वेब क्लाइंट हेले. कि डेस्कटॉप रे चलेला सीएला वेब क्लाइंट. कि लैपटॉप रे चलेला सीएला वेब क्लाइंट. जहां भी सर्वर सहित कनेक्टेड हेले रिक्वेस्ट कले इंफॉर्मेशन पाई से माने गोटे वेब क्लाइंट हेले. आमे बेले बेले कहू ना आज सर्वरटा जाम हे गला, सर्वरटा डाउन हे गला. एक्चुअली सेमती किछु होइनी. जेमती गोटे ट्रैफिक पोस्ट रे ट्रैफिक पुलिस रही कि अनेक गुडा व्हीकल को मैनेजमेंट करे. गोटे ट्रैफिक पोस्ट रे जेति गाड़ी रहिबा कथा ताठ जतबे अधिक गाड़ी पछि जे जेमती ट्रैफिक पोस्ट जाम हे जाय. एक्जेक्टली गोटे सर्वर रे गोटे समय रे जेति क्लाइंट कनेक्टेड होबा कथा बा वेब क्लाइंट कनेक्टेड होबा कथा यदि मोर ओवर ध्यान कैन कनेक्टेड हे जानती ताहले सेतबेले वेब सर्वर भी जाम हे जाय. ओके लिव दैट. आउ केतबे से विषय भलो से डिस्कशन करिबा. A protocol in the URL https://www.scientistechnologyeasy.com is a protocol in the URL https://www.scientistechnologyeasy.com is eta gote konta. Option A www, option B https, option C .com and option D all of the above. एटा होची एक्चुअली गोटे https. https माने को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ताले एठी प्रोटोकॉल दा जोटा होची बा एथरे जो प्रोटोकॉल दा यूज होची सेटा https. तो https बोली मो कहली आहुरी बहुत सारा प्रोटोकॉल इंटरनेट रे यूज करा जाय जंदे कि TCP by IP, IMAP, तापरे तमरो होची POP, SMTP, टेलनेट, गफर बहुत सारा जिंस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Each computer connected to internet must have a unique IP address. The IP address is converted into जिते मशीन हम जानूचे इंटरनेट से तो कनेक्टेड होचंदी समस्त गोटे आईपी नंबर थाए. ताले से जो आईपी नंबर आमे कहूचे सेटा कन्वर्टेड इनटू ए बाइनरी स्ट्रिंग. ऑप्शन बी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग, ऑप्शन सी डोमेन नेम एंड ऑप्शन डी ए हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग. दैट मस्ट बी कन्वर्टेड टू ऑप्शन सी डोमेन नेम. सेटा गोटे डोमेन नेम को कन्वर्ट हो जाए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Currently the IP addresses or internet address is option C, option A 66 bytes long, option B 4 bytes long, option C 8 bytes long and option D 16 bytes long. That is now 32 bits but jota koche 4 bytes. Okay, next question for you. A small piece of data sent from website and stored user's browser is called option A synchronous file, option B cookie, option C web page, option D hochi information. Actually that thing is known as cookie. Cookie is a very temporary file. बहुत कम जगह रही है approximately 4 KB भितरे. तमे देखिबो कुकी ऊपर क्लिक कर लागु संगे संगे सही वेब पेज टा फिटी जो. आउ केतले भलो से ता विषय टे डिस्कशन करिबा. समय बहुत सीमित अछि तो हमको कंप्लीट करिबा को पड़िबो. ओके which of the following is the nature of cookie? Cookie रो नेचर टा एक्चुअली कोन? ऑप्शन ए नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन बी वोलेटाइल, ऑप्शन सी ट्रांजिट एंड ऑप्शन डी इंट्रांजिट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ट्रांजिएंट. एटा होची सबले ट्रांजिएंट रहे. ओके तो आज समय तो बहुत फास्ट चलिला. ओके फास्ट चलिला समय आमे बहुत फास्ट गले कहीं ना बहुत गुडा एक्सप्लेनेशन आ बहुत गुडा तक एलाबोरेट करबा को पड़िला. ओके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम we have completed some important parts of the internet, not the all the parts, only not the important parts, some portion of the important part. किछिटा important part रो portion आमे कंप्लीट करले एंड समय अनुसार आहुरी भी इंटरेस्टिंग जिनसोडा को म तम पाई नै के आसी आहुरी भलो से भी डिस्कशन करिबा. ओके थैंक यू.
for joining this class.